ओम कृपामे कहापादोषी हागवत पुनः ततो गुणसने अभिततो विराज जायत विराजो अधिपुरुषः सजातु च प्रजा भूमिमतो पुरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। हरि ओम भूर्भुवस्सुः। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। ओम महादीपो ज्योति ब्रह्मण्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरते पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साध्यः कृतः यावत् कर्म समापितं तावत् तुलसी श्रोवा। ओम दीप नारायण नमो नमः। भूर्भुवस्सुः। फिर फूल पकड़ा बोलो हाथ में फूल चावल शंकर फूल फूल के चावल के लिए जल जल्दी हाथ डालना। हाँ 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 हरि ओम भूर्भुवस्सुः। ओम भूर्भुवस्सुः। ओम विष्णु 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 द्वितीय प्राधे से सुबारा करते वैवस्व प्रश्नं कलियो कर्तम जने मासा राम मासने अद्यः अद्य मासं मासा राम मासने अद्यः वैशाख मासस्य कृष्ण पक्षस्य एकादश्यां पूर्वपुंतायां अद्य पवित्र दिने शुक्रवासरे यथा पुत्रस्य अहम नाम लीजिए सकल परिवार सपरिवार का मान जाती सकल परिवार को सहिताय वत्स पुत्र अस्मत् पिता पिताजी का नाम है हरे राम नामस्य स्वर्गीय नामस्य नामस्य आत्मा आत्मा शांति शांति मोक्ष मोक्ष प्राप्ति सद्गति प्राप्ति हेतु स्वर्गलोके सतलोके प्राप्ति वैकुंठ धाम प्राप्ति तथा यम मार्गे यम लोके भोजन तृप्ति प्राप्ति हेतु अद्य अंतिम संस्कार पश्चात चतुर्थ दिने चौथा निमित्तकम वेद पुराण श्रीमद् भगवत गीताया पाठ तथा तथा श्रवण यथाशक्ति यथाभक्ति विधानेन अहं ओम यमाय धर्मराजाय नित्यवे संतकाय वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय औदंबराय तन्नाय मिलाय परमेश्वरे दृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। ई धर्मामृतं श्रेष्ठ धर्म धर्मो विचारक धर्मेण धारयन् लोके धर्मराज नमस्तुते। ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम शांतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम मृत्यवे नमः। अनादि नमो देव शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रीतमोक्ष करो। वासुदेवाय। हरि ओम भूर्भुवस्सुः। अब ये तुम भी लो ये सपना मीला भी लो। ओम भूर्भुवस्सुः। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुम्नमणिर्वैष्णवैः
वेदैसाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणाप्रियमनङ्गमदाकारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा है, अब यहाँ का काम हो गया, ठीक है। अब मैं गीता पाठ करूँगा, फिर ठीक है। पूजा का संकल्प पाठ अरदास सबसे लास्ट में और सबसे दरबार यह सब कुछ ज्ञान इसको फार्मर वाला this 50 years before this farmer they used to put them on their shoulders. सबको राम राम, सबको राम राम, राम राम। मेरा सबसे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रस्तुत्यन्ति देवैः सवेत् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततल्पतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणाः
देवाय तस्मै नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफलिन्दसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं तथा कृपया विस्तरमश्रुपूर्णाकृतिक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनस्य भगवान् वद कृतस्वाकस्मदमिदं विषमेण समुपस्थितम् अनार्यदृष्टमस्वर्य न कीर्ति कर्मरजनम् कलज्जमस्मकमपात नैतत्कयोपपद्यते शुभं निजयदर्वल्यं त्यक्तुतिष्ठपरन्तप अधुनवाद कथं विश्वमहं सङ्खे द्रोणं च मधुसूदन ईशुवे प्रतिवत्स्यामि पूजाः परिशोधन गुरुन् हत्वा महानुभागान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपि लभते आत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिशान् न तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेन यदि वा न जयो यानेव हत्वा न विजिगिषामः सेवस्थिता प्रमुखे धनतरसा कार्पण्यदोषो अहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसमूढचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं गृहीतं मे शिष्यस्यं शाधिमां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममानुपद्या यच्छोकमुच्चे स्वमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सर्वत्वनिधं राज्यं सुराणामपितानुपत्यं सन्दर्वाद एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणकेशपरन्तप नयोश्चैति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिं भक्त्वा तं वाच ऋषिकेश ग्रासन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच श्री भगवानुवाच असुच्यानवसुत्यस्तं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वैवाहं जातुनासं न तं नेमे जनाधिपा न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं धरः तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र नमुह्यते मात्रा स्वासास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायनो नित्य संस्थितिस्तस्व भारत यमिना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदूतसुखं धीरं सौमृतित्वाय कल्पते न जानासको विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरसिद्धिस्कन्धः समयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी दुर्विद्धि येन कर्ममिदं ततं विनाशमप्येष्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्त इमे देहा नित्यसुप्ता शरीरिणः अनासीम प्रमेयस्य तस्मात् विद्यस्व भारत यैनं विद्यन्तारं यस्यैनं मन्यते हतं उभौ न विजानीतो न हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नयं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येन मदमद्यं कथं स पुरुषः पात
संघातयति हन्तिकं वासां सिद्धिराणि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपरम् तथा शरीराणि विहाय नन्यानि संयाति नमानि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वर्गीय श्री हरिराम कक्कर जी की आत्मा शांति के लिए, वैकुंठ धाम प्राप्ति के लिए वेद पुराण उपनिषद का पाठ वचन और कथा के माध्यम से आत्मा शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। According to the Srimad Bhagavad Gita, only the physical body gets born and die, but the soul is part of the Supreme Being, never born and never die. According to the Garuda Purana, after death, within 13 days, the soul will be present here in this land. After 13 days, soul start journeying to the Yamaloka. The Yamaraj is judge of the dead. The Yamaraj will declare the declaration. Within 13 days, soul present here. That's why by the Holy Script, Srimad Bhagavad Gita, we are praying, we are listening the Holy Script slokas and praying for the peaceful journey of the divine soul, Shri Hari Ram Kakkar soul. According to the Garuda Purana, there will be 86,000 yojan. It is about 1 million miles away from this land. Every day, 247 yojan travel should finish with the agent of Yamaraja. It takes about 1 year, 347 days, according to the lunar calendar, to reach the Yamaloka. There will be different way, different sitting place for the soul. Only 2 things will be credit for the entire journey. One thing is whatever good karma in our life, and other thing is whatever prayer in the life and after the death also. Those 2 things will be the credit, and it helps to the entire journey to reach the Yamaloka. And Yamaraj will declare after 1 year the death anniversary called the Varsi. Yamaraj has the 4 options. One option is the liberation. Liberation means the divine soul, the human being soul will merge to the supreme being soul. It's called the ultimate peace. After that, death, birth circle will be in. Second option may have the heaven. Heaven is because of the good karma, and that long time we have to spend in heaven because of the karma. And after finishing that credit, we have to circle again 8.4 million times of different life, and by the God grace, we get the human being body and the soul by the grace of the God. The human being is very thoughtful because only this life we can understand difference between body and the soul. Only this life
we can understand difference between our power and the supreme being power. Only this life we can understand what we can do and what we cannot do. According to the Srimad Bhagavat Mahapurana and the Srimad Bhagavad Gita, so death, time of the death is already declared before birth. And when time will finish, we should leave this body and the soul will start the other journey, new journey. The death of the body is not ending of the journey. It is the one turning point of this life. After 8.4 billion types of life, human being can pray, can do the good karma, and can pray the Supreme Being. That's why the Srimad Bhagavad Gita also focusing three things. Chapter 1 to chapter 7 focusing on the karma, good work, helping to the others, doing good karma, doing positive karma will help for the good credit. Chapter 1 to 7. Chapter 8 to 13, Srimad Bhagavad Gita is explaining about the devotion, how we have to devote, we have to make the devotion, how we have to pray to the God, and how God is important for us, what God can do for the whole universe. That is explained in the chapter 8 to 13. And after that, Srimad Bhagavad Gita explained about the Gyan, the knowledge. Because without knowledge, liberation will be no success. That's why the first part is the work, duty, second part is devotion, and third part is knowledge. Knowledge is that. So if we understand difference between body and the soul, if we understand difference between the individual soul and supreme being soul, and if we understand that every human being and every animals are the part of the supreme being, we are also the part of the God. We all have the God's soul, and the animals, birds, all those living things has the supreme being soul. If we understand that, we will get the liberation, and by understanding that divine soul, Shri Hari Ram Kakkar soul will get the liberation, and he will have the peaceful journey to the Vaikuntha Dham. May God bless his divine soul, and may God bless the entire family members to give the strength in this difficult time. So now at this time, I'd like to ask Maharaj, Madan Kumarji Maharaj Acharya ji to express some view and part. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Santam Saswatam Akrameya Managha Nirvana Santi Padam Brahma Visham Farindra Siddhamanisam Vedanta Vedyam Vibhum Ramakyam Jagadiswaram Suraguram Maya Manusya Harim Vandeham Karuna Karundra Duvaram Bhupala Chudam Yasya Smaranamatrena Janma Samsara Bandhana Vimuchyate Namastasya Praveshaya Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shankho Ram Ram. ये कथा है सो बहुत समय अजीब समय है, फिर भी मैं
उनके साथ मैंने 86 से 2006 तक हमने उनके साथ जीवन बिताया। मंदिर के सामने ही घर था और सवेरे जैसे आरती हुई, आरती के बाद अपने वहाँ बहादुर रघुवीर दोनों मुखों से तो पंडित जी का आरती हो गया, उनको नाश्ता दे दो और भगवान का भोग भी लग जाएगा। 12 बजे मंदिर बंद के बाद भी वो कहते पंडित जी कहाँ जाएंगे कि घर खाना लेट हो जाएगा, चलो उनको पहुंचा दो। जब अमावस्या पूर्णिमा का होता था स्पेशल भोजन भी आगे पहले हमारे लिए भेज देते थे। हमारे उनके घर से बहुत ही ज्यादा हमारे दोनों बच्चों का, हमारे फैमिली का हर प्रकार का ध्यान रखते थे। बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछते थे, फीस के बारे में और खर्चा के बारे में कुछ भी और भी अलग होता था, दैनिक सब कुछ पूछते थे शिक्षा में। तो कई बार हमारे को मंदिर में किसी प्रकार की कोई लंगर प्रसाद की आवश्यकता होती थी तो उससे बाद उनसे कहते थे कोई बात नहीं, लंगर के लिए जो भी चाहिए ले लो, कोई बात नहीं। तो वहाँ दोनों थे तो उनको बोल देते थे, गाड़ी से सब भेज देते थे। हमारी पढ़ाई के लिए, गुरुकुल के लिए काफी उन्होंने हमारे साथ सहायता किया। कथा तो क्या करें, फिर भी हिम्मत बांध के लिए कुछ न कुछ शब्द का आत्मा शांति के लिए भगवत गीता का पाठ, जिससे कि उनको आत्मा की शांति हो। कहते शास्त्र में आदि शक्ति राधा रानी वृंदावन मथुरा में जब जाते हैं भगवान कृष्ण, तो वृंदावन में नंद बाबा यशोदा जहां वहां के जितने नगर निवासी थे, जब भगवान उनसे विछड़ता है तो वृंदावन के लोगों को काफी कष्ट होता है। फिर भी अपने परिवार के सज्जन बंधु बांधव के साथ समय व्यतीत करते हैं। कहने के तात्पर्य, जब अपनों से कोई बिछोड़ता है बहुत दुख होता है, लेकिन परमात्मा ने यही रूल बना दिया है, जो प्राणी यहाँ जीवात्मा यहाँ आया है तो उसको जाना ही है। अवश्य में भक्तव्यम, संस्कृत में कहते हैं अवश्य में भक्तव्यम। और भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में 2 अध्याय में लिखा है, जो आसान से देना नियथा विहाय नवानि गहना तीनरो पराणि तथा शरीरान्य विहाय दीना नन्याति सय्याति नवानि देहि। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, जो जीवात्मा यहाँ पृथ्वी पर लोक पर आया है उसको अवश्य ही जानना पड़ेगा। हम अपनी ही इच्छा से इस धरती की सृष्टि करते हैं, फिर अपनी ही इच्छा से हम इसको अपने मुखाग्नि में प्रवेश कर लेते हैं, संहार कर देते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। इस तरह संसार का परिवर्तन होता रहता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी, उनके बारे में कहा जाता है कि देवताओं को भी जब आवश्यकता पड़ी दानों के युद्ध में, तो महाराज दशरथ जी ने उनको सहायता की थी। साक्षात परम पिता परमेश्वर संघ चक्रधार पर चारों आयुध के रूप में राम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न के घर में अवतार लिए थे। ऐसे महापुरुष का भी निधन हुआ, यहां से जाना पड़ा। बच्चे लोग जो भरत जी ननिहाल में थे, वहां से आते हैं। ये दोहा मैंने उन्हीं से सीखे हैं, स्वर्गीय श्री काशी राम कक्कर जी से। उन्होंने ये उनको बताया, सुनो भरत भावी प्रबला बिलख कहूँ नीला हानिला
भाव जीवन मरना, यस अपयस विधि के हाथ। गुरु वशिष्ठ जी, पहले भी ऐसा था, संसार में कोई घटना होता था, कोई अपने से अलग होता था, गुरु ब्राह्मण के पास जाते थे, क्योंकि हमारे तो आध्यात्मिक है, रिलीजियस है, उनको जीने की कला सिखाते हैं। शास्त्र जो है हमको अंदर की भावना को जानते हुए उस प्रकार हमें ज्ञान देते हैं आत्म तत्व का। ये आत्म तत्व अपुरुषय है। जीवन, मृत्यु, लाभ और हानि भगवत गीता में भी लिखा है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानात् मानयोः शीतोषु दुखेषु तः संग विवर्जितः। कहते हैं लाभ हानि, जीवन मृत्यु, सुख दुख, राग द्वेष, भय पीड़ा, जितने भी हैं ये सब परमात्मा के बनाए हुए। भगवान सतयुग में लक्ष्मी नारायण आए, उनको भी जाना पड़ा। त्रेता भगवान राम जी आए, उनको भी जाना पड़ा। फिर भगवान श्री कृष्ण, उनको भी जाना पड़ा। ये परंपरागत। फिर कलयुग है, फिर कलयुग का भी प्रलय होगा, फिर सतयुग, इस तरह चारों युग चलता रहता है। हमारा जो शरीर है वो परिवर्तनशील है। हमारे शरीर में भी 4 अवस्थाएं हैं, जैसे 4 युग है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 4 अवस्थाएं हैं। भगवत गीता के अनुसार कहते हैं, जब हमारा बचपन नहीं रहा, हम बचपन में जब जाते हैं तो हम बहुत वैराग्यता आ जाती है। वहीं पर किशोरावस्था में आती है तो राजसी भाव आ जाती है। फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर वैराग्य आ जाती है। हमारे जीवन में भी 4 अवस्थाएं आती है। जब हमारा बचपन नहीं रहा, हम नन्हे से बालक थे, जबकि हम संसार के कोई भी पदार्थ से हमारा लगाव था, किसी भी पदार्थ से न किसी से था। हमें सिखाया पिता ने, ये तुम्हारा ये रिश्ता है, ये तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। उंगली पकड़ के हमें चलाया। हमको कुछ भी नहीं ज्ञान था, वो भी अवस्था हमारी चली गई। कहते हैं, मेरे शास्त्र के अनुसार कहते हैं, जब ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, हमारा ही हंस, हम ही भोक्ता है और हम ही भोग्य है। भोग्य और भोक्ता हम ही है, सिर्फ निमित्त है। कहते हैं, यस्यांके च विभाति धूधर सुता देवापका मस्तके भाले भाल विदुर्गले जगयलम यस्योरसी व्यालया सोयं भूति विभूषणः सर्वादिवा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा शिवः श्री शंकर पातु मां। भगवान शिव कहते हैं, संसार एक स्वप्न है। उसी को रामचरितमानस में गोविंद स्वरूप में तुलसीदास जी ने लिखा, लक्षिते जल पावक गगन समीरा पंचतत्व अति अधम शरीरा पंचतत्व अति अधम शरीरा। अति पंच भौतिक शरीर से बना हुआ यह मंदिर, सुंदर मंदिर, इस मंदिर में विराजमान जो आत्मा रूपी मूर्ति बैठा है, हम उसी को नमन करते हैं।
हम उसी के सहारे सारा सजावट होती है। इसी आत्मा को हम सारे बॉडी से सजावट करते हैं। जब यह आत्मा चली जाती है तो ये शरीर की मंदिर को हम फिर विसर्जन कर देते हैं, प्रवान कर देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि संस्कार करते हैं, मुसलमान धर्म के अनुसार हम दफनाते हैं मिट्टी में, और सन्यासी योगी जो लोग होते हैं वो जल में प्रमाण करते हैं पवित्र नदी में। ये हमारी तीन गति होती है शरीर होती है मंदिर का। लेकिन इसके अंदर रहने वाला जो आत्मा है वह शाश्वत है, वह दिव्य ज्योति है, उसकी नाश नहीं होती। वो तो शाश्वत है, वह अमर है, उसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। सन्मुख होए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तमहि। कहते हैं इस शरीर बार बार आता है। हम कई बार मकान को अनेक तरह का हर 10 साल 15 साल 20 साल में उसको रिनोवेशन करते हैं। इस शरीर का भी ऐसी है। इसी को दूसरे अध्याय में भगवत गीता में व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को इस आत्म तत्व के लिए अनेक प्रकार का व्याख्यान किए। नवानि गहनाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय वेदान् नन्याति शय्याति नवानि देहि। कहते हैं जिस तरह पुराने वस्त्र या उस वस्त्र का कोई खोट आ गया है, कुछ दोष आ गया है, उस वस्त्र को हम चेंज कर देते हैं, दूसरा वस्त्र ले लेते हैं। हम उससे कोई गुना धोना नहीं करते हैं। लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे भी होते हैं जो गुडलक होते हैं, उसको हम संभाल के रखते हैं। कुछ समय के बाद हम उसको निहारते हैं, उस वस्त्र से भी हमको लगाव हो जाता है। इसी प्रकार यह आत्मा रूपी की जो मंदिर है, यह शरीर, इससे हमको लगाव हो जाता है। जब हमसे कोई बिछुड़ के जाता है तो रुदन आती है। वह उद्धव ने राधा रानी से और वृंदावन के जितने भी श्रीरामा सुदामा जितने भी थे, सबको उन्होंने वेदांत की अवस्था बताई है, उपदेश दिया है। उस समय भी वहां वृंदावन वासी ने कहा, हे उद्धव तुम क्या जानो प्रेम क्या होती है, बिछुड़ क्या होता है, बिछुड़ना क्या होता है, अपनों से कोई छोड़ के चला जाए उसका कष्ट क्या होता है। किंतु दिल की बात होती है, आत्मा की बात होती है, शरीर की बात होती है, इंद्रियों की बात होती है। बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी हमारे रीति रिवाज में सब कुछ फॉलो करनी पड़ती है। और शास्त्र के से वेदांत, वेद, पुराण, गीता, भागवत के द्वारा अपने आप को शांति के लिए, अपने लिए भी, जो जीवात्मा यहाँ से गया है उसके लिए भी हम प्रार्थना अरदास करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, जिस लोक में गया हो अपने चरणों में वास देना, अपने लोक में वास देना, पीछे समस्त परिवार का सुख शांति देना। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, सच
सखा है प्रभु जी हमारे, माता पिता श्री संबंधी सारे, भूलो न भाई हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं, सोचो विचारो प्रभु को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। ये प्रार्थना हमें स्वर्गीय श्री हरि राम कक्कर जी ये गाया करते थे। नवरात्रि के समय में हम वहां माता की पूजा 6 दिन 7 दिन की पूजा होती थी, फिर लस्सी करने के बाद फिर हम विसर्जन कर करके फिर ये प्रार्थना करते थे, हम लोग सब मिलकर करते थे। कहते हैं व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी यादें अमर होती है। आज शास्त्रों की रामायण भागवत हजारों साल पहले व्यास जी ने रचना की, आज भी हम उस रामायण को, पुराणों को, शास्त्रों को पाठ करते हैं। व्यक्ति चला जाता है, उसकी यादें, उसकी क्रियाएं, उनका आचरण हम याद करते, वह अमर हो जाता है। यस्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे, नमस्तस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। भगवान स्वयं सबकी जीवात्मा में स्वयं रहते हैं और वह आत्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, कहते जिस तरह रात बीतती है दिन आता है और फिर किनारे में रात शाम लगी रहती है, फिर शाम होता है, फिर रात होता है, फिर सवेरे लगने लगा रहता है, फिर सवेरे हुआ, फिर दिन हुआ। इसका हमारा जीवन भी ऐसा है। इस तरह 84 लाख योनि इस जीवात्मा को भोगने के बाद यह मनुष्य योनि प्राप्त करता है। यह मनुष्य योनि कहते हैं शास्त्रों में, जबने भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। आज उनके सुपुत्र जिस तरह वह अपने भगवान के गुरु की सेवा, अपने मंदिर में गुरु की सेवा भी, देवी देवताओं का व्रत पूजा पाठ सब कुछ करते थे। आज उनके सुपुत्र भी धार्मिक हैं। कहते हैं 12 पुत्र पिता के घर में, जो पिता धर्माचरण करता है वह धर्माचरण उस पुत्रों में भी, अपने बच्चे में भी आता है। भगवान को मानने वाले हैं। जैसे वह स्वयं साधु प्रेमी थे, गुरु प्रेमी थे, ब्राह्मण प्रेमी, उसी तरह उनके संतान भी ब्राह्मण प्रेमी, साधु प्रेमी,
और सत्संग का भी, पुराणों का, वेदांतों का सब कुछ रखते हैं। इस जगह अस्थिर है। जिस तरह एक बुलबुला, पानी का कोई अस्थाई नहीं होती उस बुलबुले का, कोई भी उस बुलबुले का कुछ नहीं बता सकता कितने टाइम ये रुकेगा और कितने टाइम ये बंद हो जाएगा, जो पल में बुलबुला आती है। ये जीवन भी ऐसी है, कब यह जीवन का नाश होगा कुछ पता किसी को नहीं है, वह परमात्मा को मालूम है। भगवान श्री अमर कथा सुनाते सुनाते उमा को कहते हैं, जो उमादार जो शीत की नाई, समय न चावत राम गोसाई, समय न चावत राम गोसाई। बेवा हम तुम एक निमित्त हो, हम एक कठपुतली के भांति इधर से उधर उधर से इधर ऐसे करते हैं। वह परमात्मा ही हमको जो भी लिखा है विधाता ने हमारे, उस तरह हम करते हैं। हमारा तुम्हारा जो अमर कथा की है, ये भी परमात्मा ने पहले ही लिखा हुआ है, हम उसको फॉलो करते हैं। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये जगत स्वप्न है, अगर है तो सिर्फ भगवान का सुमिरन भजन ही सत्य है, इसके सिवा जो भी है सब मिथ्या है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि भवधारा। हे उमा, इस घोर कलयुग में श्री भगवान नाम का ही नौका है। इस भगवान नाम के नौका को ही पकड़ करके हम भवसागर पार कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में एक प्रकार की पीड़ा, भय, कष्ट, सुख, दुख, क्षणिक सुख प्राप्त होता है। वो सुख पता नहीं चलता है, लेकिन दुख का हरदम हम अनुभव करते रहते हैं। लेकिन जब भगवान का भजन मिलता है, भगवान के साथ हमारा संपर्क होता है, भगवान के साथ जब संबंध बनता है, तब जो हमारा आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। निगमकल्पतरु कलितं फलं सुखमुखादवितनितसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह आत्मा के शरीर में जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में कई प्रकार के पाठ हैं। यह सब अंग प्रत्यंग जो है कई जन्मों का एक एक मिल कर करके यह शरीर का रचना होती है। जिस तरह एक मकान में ईंटे की, मिट्टी, लोहा, कई प्रकार का चीज जब उसमें डाला जाता है तब उस मकान की श्रृंगार होता है, सुंदरता होता है। इसी प्रकार यह शरीर में यह हाथ, ये आंख, ये कान अलग अलग जन्मों से आए हुए हैं, हमारी कर्मों के ही हैं। ये सब एक मिल करके हम शरीर में कई कोटि लोग हैं, 35 करोड़ देवी देवता इसमें वास करते हैं, और हर आदमी अपने अनुसार इस आत्मा को, शरीर को सजाते हैं। ये आंख क्या है? सूर्य है। ये मन क्या है? चंद्रमा है। हमारे जो हाथ है, हमारे शरीर में जो जल है वो वरुण देवता है, जल देवता। हमारे शरीर में जो खाना हम खाते हैं बचता है, ये गरुड़ पुराण की सब्जेक्ट है। गरुड़ पुराण में इस सब कथा आती है।
इस शरीर के अंदर ही हमारे 7 समुद्र हैं, हमारे 7 ऋषि हैं, विश्वामित्र, जमदग्नि, भगवान, गौतम, अत्रि और वशिष्ठ। ये हमारे शरीर में है। ये शरीर के पेट जो 7 का है, 7 जो है मंजिल है, इसमें सप्त विश्वामित्र, जमदग्नि, भगवान, गौतम, अत्रि निवास करते हैं। हमारे हृदयवास में ब्रह्मा विष्णु महेश, नाभि में ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादुर्गा, सहस्त्र यहाँ जो माथे में है, समस्त देवी देवता वास करते हैं। तब ये शरीर बनता है और इसमें इस शरीर को चलाने वाला जो विश्वेश्वर भगवान है, यो योऽन्तः प्रविष्ट ममात्मा प्रसूतान् संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यास्तहच्चरस्तमत्वगादि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। अर्जुन को भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ। ये शरीर ही विराट रूप है। हम कई रूप लेते हैं। बच्चों के सामने हम अलग रूप होता है। हम जब अपने क्लास फेलो के पास बैठते हैं, उस समय हमारा रूप अलग होता है। जब हमारे से कोई सीनियर बैठता हमारे पास, हम उसके पास अलग रूप होता है। कोई हमारा आध्यात्मिक गुरु होता है, हम उस समय हमारा रूप अलग होता है। हमारी बेटी होती है, उसमें हमारा रूप, हमारी मासी होती है। हर रिश्तेदार के समय हर प्रकार का हमारा रूप बनता है, इस शरीर का ही। लेकिन आत्मा पुरुष है, आत्मा साक्षी है, वह विटनेस है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, गोविंद नामो धर्मागवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हर श्रीनाथ एक हरदम कुछ भी हो कोई बोलते थे, स्वर्गीय श्री हरि राम कक्कर की ये प्रार्थना अवश्य करते थे। वो सांचे दरबार की सिद्धार्थ अपने दादाजी के लिए पुष्प के रूप में कुछ शब्द बोले, कुछ सिद्धार्थ के लिए। Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। Good evening, everyone. I am Siddharth Kakkar, Balram, Pinki's son and Dadaji's grandson. I would like to thank you all for coming and being here to celebrate Dadaji's life. As you all know, he lived an amazing life and died peacefully in his home in Delhi a few days ago. I would like to request that those who are leaving early to please have some lumber or take some food before leaving, as Dadaji would be very upset if you left without eating. To begin, I'd like to request my cousin Akriti to share a few words that I believe sums up who Dadaji was. Thank you everyone for coming out today. There are no words to describe the loss that our family faces. Every time that I pray, I say a small prayer for the deceased. It breaks my heart to even think that your name was added to the census sheet with Dadi and Pitaji.
Dadaji, you may be gone, but your memory will always live in our hearts. We will try our best to keep your legacy alive and do you proud. Every time that I ring a bell, I will be sure to ring it extra loud because I know that's exactly how that you liked it. Thank you so much. Thank you everyone for sharing. I would like to request my sister Amber to say a few words and share a poem with all. Thank you, Devi. Om Namo Shivaya. Thank you all for joining us during this difficult time. I'm Amber Kakkar, Ram Kakkar's daughter, and also Dadaji's youngest grandchild. Dadaji was a self-made, respected man. Everyone he touched became a better person because he strived to inspire them. Although he was born in poverty, he rose to success through his key pillars of hard work, business acumen, care in nature, charity, and loyalty. In his honor, I would like to read a poem that I believe perfectly encapsulates who he was. If you think you are beaten, you are. If you think you did not, you don't. If you like to win, but think you can, it's almost certain you won't. If you think you'll lose, you're lost. For out of the world you find, success begins with the fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outcast, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Life's battles don't always go to the stronger or faster man. But sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. Dadaji was very persistent in his state of mind. He believed that you couldn't rise unless your mindset itself was resilient. It was an honor to have even known him, let alone call him my Dadaji. Thank you, Amber, for sharing. My cousin Keshav, who isn't here with us presently, is connected, and he would also like to say a few things. Hi, can you hear me? Yes. Well, good evening, everybody. Thank you so much for being with us here today. Before I say anything, I just wanted to, I just hope everybody is safe and vaccinated. And in this eulogy, I'd like to share very specific moments with my grandfather and maybe share a little bit about him. That's something we can all remember about him and his legacy. जैसे पंजी ने अभी कहा, यादें हमेशा रहती हैं सबके मन में, सबके दिल में. It's hard to believe what we all heard a few days ago. They say that elders are like silent pillars in the family, and indeed, Dadaji was one. I remember one very specific instance when I was I think very young in Dubai. My parents sometimes say that I used to irritate him a lot, you know, sometimes maybe by hiding his whiskey bottles or sometimes just like playfully enjoying with him. You know, I remember he sometimes used to enjoy himself a lot in various get-togethers, in various gatherings, in various functions, nice and proper. That's one of the best memories I have of him.
the time when he used to pray with the bells on the second floor of his house, the time when he used to eat dinner with all of us as a family gathered together. And even so, after eating dinner when he used to pray. People often in our community remember him as a very hardworking and focused member. But I do really believe he was a people's man, and everybody loved to talk to him and meet him and have conversations with him. In life, he believed that anything and everything was possible, and he continued to broaden his horizons, from reminding us that it's always important to be self-sufficient in life and always supporting and uplifting other community members. We do all hear sometimes and recall his accomplishments in life, but most importantly, I'd like to remind people that he taught all of us, and most importantly, our parents as well, to lead life with dignity, have self-respect, and respect other human beings. The best memory about him, I remember sometimes when he used to look at us and smile and laugh sarcastically. And that's one of the best things I remember about him. But most importantly, the one last pleasant memory I had of him was one small encounter with him when I was leaving for the United States. Specifically, I remember when my father parked the car near the gate, I touched his feet. And I remember me, my father, my grandfather, and my uncle, Ramesh, we were gathered together. And one small instance, my Dadaji asked me in Punjabi, I didn't remember. My Dadaji asked me, and my uncle decoded it for me. He asked me, "You got a haircut?" I said, "Yes." I didn't understand. My uncle said it to me. Who knew that would be my last encounter with him? Who knew those would be some of the last words I would ever hear from him said to me ever in my life? Who knew life would take a different turn in the years to come? He smiled at me. He laughed as I said, and that's the best part I remember about him. We left. I never saw him again. I wish I could see him and touch his feet one more time and meet him. Dadaji, we all will miss you. No matter what, you will always be in our memories. Thank you. Thank you, Nisha, for sharing our personal experiences with our daughters. I would next like to introduce my mama, Kamini Kapoor, one of the community leaders in Virginia and Maryland. Please come up and say a few words on the stage. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shakespeare, in his play Julius Caesar, Mark Antony says, "I have come not to praise Julius Caesar, but to bury him. I, over here, stand not to praise as I was saying, that William Shakespeare, in his play, Julius Caesar, says, Mark Antony says in the play, that I have come not to praise Caesar, but to bury him. Similarly, I have come here not to praise Shri Hari Ram Kakkar, but to say a few words as I came to know him. He was a great person, and about 14, 15 months back, when I was in Delhi, after we visited the Asami Mandir, Balram and I and my wife, we
went to visit him and pay my respects to him. And there he invited me and asked me to sit at the dining table just beside him. And I began to take meat and other delicacies on the table to offer him. And the servant came along and said, "Nahi khayenge, sirf chawal aur dahi khayenge." It was quite disheartening to me that this was his daily partaking of the meals. But then he asked everything about Virginia, about Washington, about the Asami Mandir in Faridabad. I said, my God, from here down he may not be good, but up here he is still sharp. And also he was asking about the murtis up there, and I said, why is he asking about the murtis? Then I learned that he's the one who supervised the shipment and the making, etc., of the murtis up there. So this mother also has some memories of him. I came to know that I never knew Mr. Hari Ram Kakkar before. I had, of course, heard of Hari and Harnam, but I really didn't know who they were. Yes, they were the kings of Shahzada. They were the ones who would bring out the price of the foreign currencies. And also, we all know that Hari Harnam's foreign currency exchange prices, they would be sold at a premium, and whenever they bought any foreign currency checks, those foreign currency checks, they would buy at a lower price in the market. Why was that? Because of their reputation. Hari Harnam's checks were always on the top. Then one day, my father asked me to go and get some higher denomination Afghanis. So I told my father, I said, I know who Hari Harnam is, but they don't know me. So why don't you give him a call and say, my son is coming, and if you could please give some higher denomination Afghanis to him. He said, no, you just go and introduce yourself to him and you'll be fine. So I went to their business house in Sarai Shahzada. He was not there, and they said he's at Bahar Limited. So I went to Bahar Limited. There my father's cousins, Lekhu, Papa Lekhu, and Papa Bridge were there. So they introduced me to him, said, and then said, they were having lunch there. So I took of the lunch, and then I told Papa Hari that my father has asked me to give some higher number note Kapania de Chai. And the koi gal nahi, main unko phone karna to go and get them. And later on, I said, I was thinking, why didn't he ask for the premium? Or that the sare pata hai jo कागज बड़े लोग जरा लैंडलॉर्ड लोग थोड़े से पैसे कमीशन या fees only है. But he never took anything. So I was wondering why did he take anything from us or from me or from my father? Said पुत्र ले आओ ने पैसे लक्षणी. Then when Balram and Pinki got engaged and they came to take the mitha in Virginia, they arrived a bit early. So I said, oh my God, my dad is not here in Parvesh's house, my brother Parvesh's house. So I went to get my father. I said, Dad, Papa Hari Agyan family aaye mithe wase, let's go. And Zoya, unam
अगर मैं हरि की जानना वो इतने ही ना थी मेरे को. And sure enough, Papa Hari with his wife went to my father's apartment and picked him up and brought him to my brother Parvesh's house. So I was wondering, what is it that my father knew about Hari that we didn't know? And later on, he came to know that because of his humbleness, that as Amber, my niece, said, that he did not come from a wealthy family. He built himself. So he never forgot that who he was and what his beginnings were. Thank you very much, and may God bless his soul. Thank you, Dean. My brother Keaton actually has a short anecdotal story to share with you as well. Hi, everybody. Thank you for coming. It's really wonderful to see so many people, especially during this time. I wasn't initially planning on speaking, leaving out some siblings and cousins and uncles and so on, but while people were talking, the story actually came to mind. It's an interesting one because I don't think anybody here knows it. So I was touring colleges in 2015, and looking to see where I would go to school. And I stopped by the University of Pennsylvania, one of the country's best colleges, and I asked the professor of Afghanistan studies if he would meet with me just to talk about the program they have there, the studies, and so on. Old man, old man, eminent scholar. He had a huge office at the top of this museum. And I'm sitting there and I'm talking to him, and he goes, I answered your email because I recognize your last name, Kakkar. In 1970s, I was traveling around Afghanistan, Pakistan, India, and there, if you ever had to do anything with money, the person you went to had your last name. And I said, is that right? And they said, yes. We talked about it, and it turns out this man, one of the country's foremost experts in Afghanistan, India, Pakistan, old, professor of University of Pennsylvania, Ivy League school, knew Dadaji, Hari Ram Kakkar. And it's funny because as a child, I had always heard that, Hari Ram Kakkar, if you knew his name, if you knew you, would open some doors, it would help you in life. He was very generous that way, and he had a reputation. But it's very funny to me to know that that was also true in America, in Philadelphia, and at an Ivy League college. So I thought that was an interesting story, and one that you all appreciate, and I wanted to share it. Thank you. Thanks, Steve. Lastly, my colleague Laura has a couple of words to share with all of you as to who Dadaji was. On behalf of our family, I thank you all for coming today to share our grief at the passing away of my dad, Shri Hari Ram Kakkar. My father does not need an introduction. Most of you knew him, and he knew many of you. In Kabul, everyone knew him as Hari of Hari Ram, like my brother-in-law just said. Harnam Singh Ji was his business partner of over 25 years, and he considered him his older brother, who we addressed as Tayaji. The name Hari Ram was so well known that when I got married, some of my in-laws addressed me as Hari Ram's son. Dad, you truly were an amazing person.
You lived on your terms, and oh, what a life you lived. You were competitive, thoughtful, caring, brilliant, and yes, very handsome. So handsome that you thought you had a future in Bollywood and decided to run away from home at 15 around the year 1950 to go to Bombay. But fortunately or unfortunately, Dadaji intercepted you at the border. Had you made it through, who knows? We Kakkars would have been as well known as the Kapoors of Bollywood. But luckily, you did not make it to Bollywood, but instead moved from Jalalabad to Kabul at 15 and started working. Within a few short years, you were successful enough to bring your family to Kabul. You cared for and provided for your family and made sure that your siblings were professionally and personally settled. You had a natural knack for business and attracted people with your positive energy and deadly sense of humor. Our house, both in Kabul and especially when we moved to India, had a constant stream of guests and visitors, some staying for months until you were able to help them with permanent housing or work. You had a sharp, laser-like gaze that looked through a person's soul with your beautiful hazel eyes and instantly evaluated them. That's why no one could lie to you, as you saw right through them. You had such an overpowering personality that every time I spoke to you, even over the phone, I would reflexively stand up. You not only had a photographic memory, but for someone who never went to school, you had a sharp intellect. After you left Kabul, you went to Madras, and even though you did not speak a word of Tamil, within a few years, you completed a 5-star hotel, now a Sheraton, and successfully ran it for many years. You understood the value of education. When I decided to go to private school in America at 15, you did not hesitate to send me on my own in 1981. You were always there throughout my undergraduate and law study. You were one of the most successful men in Kabul. We all remember the basic principles of business and life that you taught us. You always said, if you want something, be determined and work for it. You cannot quit. And before success, you are sure to meet with much temporary defeat and perhaps some failure. When near a defeat, the easiest and the most logical thing to do is quit. You taught us never to do that. Over the years, you lectured us with stuff that seems basic and common sense. But as I have read since, these qualities were in all successful men, from Ratan Tata to Andrew Carnegie to the Rockefellers. You always said, have a purpose in life. Be ambitious, don't be mediocre. Have self-discipline. Value your time. If you don't, no one else will. Take care of your health. Without that, you have nothing. Jaan hai to jaan hai. When we were growing, you would have every small ailment looked at. In fact, due to your infatuation with health, you sent your brother Sri Ram to medical school and opened a medical office for him in India. Don't procrastinate, you would say. I know we dreaded when you asked us if we had completed some task you had assigned. You said to be positive. You rarely had the word no in your vocabulary. You were always receptive and open to new ideas and new people. Be decisive, you said. Don't be wishy-washy. Say what you mean and mean what you say. Say what you mean and mean what you say. My favorite lecture was about marriage. You said, marry the right person. 90% of your happiness comes from who you marry. Don't be overcautious, you preached. Take some risk. You never worked for anyone. At 17, you were selling transistors. You manufactured soap. You imported a variety of items from China, Europe, and Japan, and exported them to Pakistan and India.
You imported dry fruit into India. You had an exclusive agency for importing cooking oil and washing powder. You traded in foreign currency. And finally, built and operated hotels. And you were a good judge of character. All business decisions are decisions about character. All business decisions are decisions about character, you would say. Know the character of people you work with. He said, don't have prejudices or superstitions or be intolerant. You treated everyone with respect. You donated generously to good causes, mandirs and gurdwaras in Kabul and India. In that same vein, I want to mention that our mandir is supporting about 35 families with direct deposit of a monthly stipend of about 10,000 rupees in their accounts during this difficult COVID time in India. If you know anyone who needs help, please talk to anyone on our board. Sena is leading the effort in New York, and my cousin Subhash and my brother-in-law Joginder are taking the lead in Washington. And you said a lot, you had a lot to say about managing money. You said, spend less than you make. Don't be cheap, but be frugal. He said, be enthusiastic about life. Enthusiasm is infectious. You had a twinkle in your eye and a crooked smile every time you would say a punchline or something clever. Don't guess, know and find the facts. He always used to say, "Khayal ki baat mat kiya karo." He used to say, don't tell me what you think or guess, tell me what you know. Be a team player and listen to what others have to say. And finally, you taught us to keep good accounts in business. One of your cousins from Germany, Kishanla, told me that you carried the sheet of paper with 3 folds, with each fold containing what you owed and what was owed to you in Kabul, India, and Dubai. And your books always balanced, both in business and in life. As you can see, this list is long, and I'm still working on it. You lived a meaningful and purposeful life and gave us lasting wisdom that we can hopefully follow and pass on and make you proud. Dad, you would have loved to see everyone here, especially after this difficult, long past year of sickness and death. And one thing you would say to everyone that I will repeat: please stay busy with everyone and eat longer before you leave. Dad, we love you and we will miss you. Thank you. पगड़ी की रस्म करेंगे। जोगिंदर जी, पगड़ी, संजय जी, सूचना श्रीमती चीनू मेहरा, मदन और सतीश मेहरा, चौथा और मध्य मई 10, 2021, 10 तारीख को 10 मई को चौथा है, मंदिर 7 से 8 PM। जय माता दी। संजय बता दी, संजय हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पगड़ी दे दीजिए पंडित जी को।
नारायण वासुदेवा जल बच्ची का लगाएंगे सब क्या लगाएंगे श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जोगिंदर जी आगे आगे संजय मेरा कुछ बोला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वर्गीय श्री हरि राम कक्कर जी की शांति के लिए मौन धारण पुष्पांजलि के रूप में मौन धारण। संभालने के रूप में 5 बार गायत्री मंत्र का सभी लोग उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग आरती के लिए खड़े हैं। आरती श्री पंडित जी करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति कर आवे सुख संपत्ति कर कष्ट निकेतन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण परुण किसकी स्वामी शरण परुण किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं
तुम किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अघोष, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दयामय, किस विध मिलऊं कृपामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, भगवन रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कृष्ण हरो देवा। सरदा भक्ति बढ़ाओ, सरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। जलेन सिद्धेकं पुष्पैर्वयमंत्र पुष्पांजलि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। शान्ताकारं भुजगशयनं
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेरे राम जी सर्वलोकैकनाथं। दो जन दो छत्र दो प्रिय दो सूर दो हनुमान जी करे तपस्या भक्त दय भरपूर प्रथम भगवान जी को सिमरिए वरान जी करे सहाय यज्ञ पुरुष नर नारायण को ध्याये विद्या सब प्रजाय मत्स्य कवच को सिमरिए नर सुर बनाए श्री बाबन हरि को नाम ले धन निया बैठाए श्री रामचंद्र जी को सिमरिए जो प्रगट में करे सहाय मुख पुनि रसना पवित्र भगवान समाज समता श्री कृष्ण भगवान दिलों की अंतर जामी नजर जानन आकाश ज्योति सो अखिल सिपा सब खाई हो सहाय धन धन से गंगा माता तरन तारन सब दुख निवारणी तेरी महिमा करी न जाए चार धाम 84 अधिक 307 तीर्थों का ध्यान रखकर बोलना दी श्री राम चार खानी चार वाणी चरण सुपुर पानी खत्या का प्रताप देव देवी देवताओं को ध्यान रखकर बोलना दी श्री राम राधा हरि राधा हरि संतरी की में बल ध्यान रखकर सब बोलना दी श्री राम हे दीन बंधु पतितवान दीनानाथ भगवान आपकी कथा कीर्तन संन्यास की अरदास उच्चतर बाधा खाता मावतु नावत राष्ट्र की जय गौ माता की वृद्धि भक्तन की लाल राम नाम का बोलवाला रंग जो दो सुखाला संभो जय जयकार हर हर महादेव। आपकी सत्संग कीर्तन भजन स्वर्ग श्री हरि राम कक्कर को प्राप्त हो मोक्ष प्राप्त हो भगवती मां ने चरणों की बात देना पीछे समस्त परिवार को सुख शांति प्रदान सुख सहकारी शक्ति प्रदान करना बोल गणपति महाराज की उमापति महादेव माते बिहारी लाल सियावर रामचंद्र भगवान की जय बजरंगबली की जय सामाई की जय बाबा की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में स्वभावना विश्व का करुणा हर हर महादेव। ओम द्यौ शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपतयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिः शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिः। ओम शांति शांति सभी लोग गंगा प्रसाद कहते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।
Yeah, thank you. I just remember.